So a very warm welcome to all of you, and with respect to NCRT class 7th, class 8, chapter 1, unit 1, I should say, we are taking up an important but a simplistic overview, and we are looking into critical aspects कि उसमें क्या हो सकता है, what should you should be looking forward to. Even this photograph itself reminds that there is an importance given to the Constituent Assembly debates, और उसकी जो committees हैं और जो important leaders हैं वो आपको पता होने चाहिए कि क्या committees थी, क्या debates थे. इनफैक्ट अगर contemporary if there is any bill is being presented, और अगर उसमें अमेंडमेंट पहले मतलब पहले किसी चीज का अमेंडमेंट हो रहा है और इवन इफ इट इज देयर लाइक दैट, तो उसमें हमें एंगल देना पड़ेगा. ये एक देखने का इसका बात है. दूसरा, अगर आप बात करते हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो एज आई सेड बिफोर हैंड ऑल्सो कि आपको प्रियम्बल ठीक से पता होना चाहिए. प्रियम्बल के आपको की वर्ड्स पता होना चाहिए. व्हाई डज ए कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन? तो अब ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी ऐसा करके कुछ आ सकता है, उसमें एबीसीडी दे देगा और उसमें ये बोल सकता है मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन आइडेंटिफाई करो. सो यू हैव टू बी नॉट जंपिंग एट द कंक्लूजन डायरेक्टली. आपको पढ़ना है ध्यान से. तो आइडियल्स, जो ब्लू कलर से आइडियल्स हैं, तो आइडियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको देखना पड़ेगा इंडिया के आइडियल्स क्या हैं. आपको डेट्स पता होनी चाहिए कि दैट व्हेन the Constituent Assembly it came together, and then what happened between December 1946 and November 1949. what happened मतलब कि भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट बात हो रही है. पहले चैप्टर जैसे जैसे आप आगे देखते जाओगे तो आपको दिखेगा. जैसे नेपाल की बात हुई, तो नेपाल में व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट टाइम्स, ठीक है, तो वो तो आएगा नहीं. अगर इफ देयर इज एनीथिंग बट देन म्यांमार है, एंड देन देयर आर मेनी अफ्रीकन कंट्रीज जहां पर भी डेमोक्रेटिक डिबेट है वर्ल्ड में. उस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है. wherever there is a debate, wherever there is an issue, where there is a governance structure collapsing, wherever hotspot is there, उस पे क्वेश्चन आ जाएगा. whether it is economic crisis, whether it is political crisis and so on. तो ये एक इंपॉर्टेंट वे है आइडेंटिफाई करने का. आप गूगल करो झट से, अगर आपको कीवर्ड पता है जैसे मैं बता रहा हूं. आफ्टर दैट यू कैन प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ योर ओन. सिमिलरली आप अगर आगे जाओगे चैप्टर में, अगर आप आगे देखते हो तो बात होती है कि इसके अंदर एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं. दैट यू नो हाउ कॉन्स्टिट्यूशन इज हेल्पिंग, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन इज हेल्पिंग citizens to protect against certain decisions. आप जैसे अब बात हुई कि भाई जैसे मैंने बात की थी कि आपका इंटरनेट राइट सस्पेंड हो जाए. फिर उसके बाद आपका भाई टीवी पे आएगा क्या अभी भी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इज एज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उसके पावर्स क्या हैं. फ्रीडम टू स्पीच, यू नो ये वाली बात आ जाती है. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही ब्रॉड फ्रेमवर्क है, लिविंग फ्रेमवर्क है. और यहाँ पे सरदार पटेल साहब की एक पिक्चर भी है. तो सरदार पटेल साहब का कंट्रीब्यूशन क्या है एग्जैक्टली, आप ऐसे करके 3-4 लाइन में या पॉइंट्स में आप नोट करके रख सकते हो. की फीचर्स की बात होती है तो की फीचर्स फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, दैट्स व्हाट वी आर राइट नाउ टॉकिंग अबाउट. मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है बट प्रीलिम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू शुड बी नोइंग दैट कौन सी सीटें कम हुई, कितनी सीटें कम हुई. एंड देन फेडरलिज्म व्हेन वी से, देन यू शुड ऑटोमेटिकली एबल टू आइडेंटिफाई कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म कहां पर दिया गया है. फेडरलिज्म के कौन से ऐसे पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विच आर टॉकिंग अबाउट फेडरलिज्म, दैट डायरेक्टली यू शुड से. यहाँ पे फॉर एग्जांपल द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज बाय श्री ए के अय्यर. तो कोई कमेटी भी हो सकती है बाद में. आप इंपॉर्टेंट कमिटीज देख सकते हो. क्वेश्चन हैव स्टार्टेड कमिंग ऑन द इंपॉर्टेंट कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि पब्लिक डोमेन से थोड़ा बाहर है. फॉर एग्जांपल अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज अ वेरी की वर्ड. अपने आप में इस पे इफ यू थिंक फॉर अ सेकंड एंड बियॉन्ड अ सेकंड, देन यू विल फाइंड कि ये वर्ड इटसेल्फ इज वेरी हैवी एंड देन क्वेश्चन कम्स अप डायरेक्टली फ्रॉम इट. Similarly is the case with the separation of powers. So it is not mere a word, it is a whole chapter, whole book on its own. So separation of powers में मेंस में तो डेफिनेटली यू हैव टू राइट एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर एबल टू शोकेस द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. लेकिन प्रीलिम्स में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा. आप कुछ ना कुछ मिस कर जाओगे कि व्हाट इज स्टेट, इट इज कंपार्टमेंटलाइज्ड और नॉट, it is basically overlapping or not. So what is the keyword? You have to learn to identify कि keyword क्या है और उसके हिसाब से होगा. फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं यहाँ पर, लेकिन क्लॉजेस के साथ ऐसा नहीं है. बट देन ये भी आपको पता होना चाहिए, मगअप होना चाहिए एग्जैक्टली कि कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्ट क्या लिखा हो. फॉर एग्जाम्पल कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, सो इट इज माइनॉरिटी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर. तो ये आप जब 2-4 बार आप पढ़ेंगे और आपने अगर इसको समझा हुआ है तो आपको अपने आप ही नेक्स्ट पॉइंट अपने आप आएगा, फिर आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सिमिलरली राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अब उससे आगे पहुंच गया क्यू वारंटो हैबेस कॉर्पस, यू नो ये सब चीजें आने लगी हैं, उसके भी आगे आ रही हैं. तो आई थिंक देयर इज सम वे वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन.
इवन इंडियन, व्हाट इज इंडियन टाइप ऑफ सेकुलरिज्म, तो सेकुलरिज्म पे प्रीलिम्स में तो ऐसा ऑब्वियसली देयर विल बी सम केस कमिंग अप और देयर विल बी सम काइंड ऑफ एग्जांपल कमिंग अप, मींस में एक ब्रॉड क्वेश्चन आ सकता है. Similarly is case with the fundamental duties. You should know all the fundamental duties. You should know कि exact words क्या है. And as I just told you that अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, राइट डाउन द नेम्स ऑफ इंडियन स्टेट विच शेयर बॉर्डर ऑफ द फॉलोइंग विद द नेबरिंग स्टेट्स. आप में से अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यही गलत कर देंगे. वही बात है कि ऊंची दुकान और फीका पकवान. So basic you have to see, you have to understand, and you have to go by that. That is very important as far as first approach is considered, and as far as it goes by. Coming up and taking up similarly the next chapter, which will be chapter number 2, and that is also helping us to understand, means the next section, that what actually is required. That is what we have to see. Let me open it for you, and then I'll be sharing it with. Okay, I have another chapter. This chapter is about the laws. Let's go by that. So understanding laws एक chapter आ गया जैसे अभी. Now what in the prelims examination क्या है कि इंडिया के एंशियंट टाइम के जैसे लॉज हैं, मीताक्षर, दया भाग, आप कह सकते हैं स्मृतिज. आप अगर उस वर्ड को भी एक मिनट सोचोगे इसको पढ़ते हुए तो हमें कुछ कुछ समझ में आएगा. Then secondly, how in British time our law evolved. What was the British introduction? Diwani rights, Fauzdari rights, Sadar Diwani Adalat, and then you are coming towards, Law Commission, CRPC, IPC, and then finally coming till the, Government of India 1935, and then our Indian Constitution. उसके बाद ही आप आओगे ना रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग. व्हाट इज द रूल ऑफ लॉ मींस. तो ये आप जब पढ़ोगे, इसको समझोगे, देन क्वेश्चन विल ऑटोमेटिकली बी कमिंग ओवर हियर. फॉर एग्जांपल, they are talking about sedition act of 1870, लेकिन ठीक है वो तो आ रहा है, रॉलेट एक्ट. देन फ्रॉम दिस पॉइंट यू शुड टेक अप कि आज की डेट में क्या है. हाउ कम गवर्नमेंट आस्क्स that certain things should be banned or certain things should not be in the public domain, under what law. उसके ऊपर फिर पूरा बवाल क्यों होता है. So evolution of rule of law is also important, and secondly how law is being applied is also very important. For example, domestic violence का example है, तो you should be writing here, यहीं पे अपनी किताब में आप लिख सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लिख सकते हो आप. उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के कुछ अगर एक्ट है, वुमेन के स्पेशल राइट्स कौन कौन से हैं जो लॉ के द्वारा प्रोटेक्टेड है. व्हाट आर द laws which are protecting children, what are the laws which are protecting marginalized section, what are the law which are protecting minorities, what are the law protecting any vulnerable section of society. And that your half of the job will be done, क्योंकि there will not be any kind of sections asked because this is not a technical exam, but then it is very very pertinent you to know what are the unpopular and controversial laws, because they are in the news. Why the government is supposed to take them back, कैसे वापस ले लेती है. फॉर एग्जाम्पल इवन द फार्मर लॉज, जो एग्रेरियन लॉज आए थे वो भी वापस ले लिए थे. यू शुड बी एग्जैक्टली नोइंग दैट. So not only just in the civil domain, but also in the other sectors, including industrial and agriculture, services, and even in GST, because they are all linked with law. So directly law is not required, but the application of law is required. So you should be looking forward to these chapters, and that is really going to help you. And definitely, whatever is given in the chapter, read every word, every area very carefully. Do not leave footnotes, because questions might be coming from the footnotes also. That is the whole point. Coming to the next chapter, um, I'm like not having the chapters in one sequence, but I'm picking up as and soon they are coming up. But then that's fine, because our idea is to play with the ball without wasting time. So understanding our criminal justice system. या अभी इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात हो रही है. सो दैट इन दिस रिगार्ड यू शुड से दैट already question is coming up on judicial custody, question has been coming up on legal literacy. So we have to understand that how the whole domain is being uh, uh, expected. Okay, so you can say that in case of India, there is a question of police reforms. There are I should say there are
lot of efforts being made by different people in different different aspects. Even political parties they talk about it, लेकिन बहुत बार वो सिर्फ बोलते हैं, वो करते नहीं है. So the question here is, आपको उसका भी आइडिया होना चाहिए that what is happening, why certain thing is being done, why certain thing is uh, being not allowed, and so forth. Because the idea is that the question will be picking up those areas, those questions which are actually of great relevance, but then maybe not directly in the public domain, जिस पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की गई है. चर्चा की भी गई है तो बहुत छोटी सी बात पूछी जाएगी, इतनी छोटी बात पूछी जाएगी कि आप उतना छोटा सोचेंगे भी नहीं. So this is very very important for us to understand. This is very important for us to believe, and very important for us to portray. Okay, so this is what I was talking. In fact, I was being sent a whole PDF of the complete book, so I was just looking forward to it also. If it is get downloaded तो मैं उसको भी ऐड कर दूंगा. So what is the role of police in investigating? Fine, witness ये आपने देख लिया, लेकिन fine ठीक है, question कैसा आएगा, question कैसा आएगा? So this is how it is. Article 22 of the Constitution. Now this is a very simple whole benchmark. ये रटा होना चाहिए. डी के बसु गाइडलाइंस आपको रटी होनी चाहिए. अभी रिलैक्स माइंड है. whenever you are starting, just completely go for it. Do it in a such a way कि आपको सारी चीजें एकदम पता हो. एग्जाम में अचानक से आप चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा. व्हाट इज एन एफआईआर? जीरो एफआईआर की बात करते हैं, ई एफआईआर की हम बात करते हैं. सो दैट इज हाउ इट इज. That is how it is. We have to see a public prosecutor. So the case was called State of Delhi Administration versus Lakshman Kumar and others. State versus Shanti Hemram and not Mrs. Shinde versus Shanti Hemram. So कैसे कहा गया, क्या कहा गया? तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैसे होता है अपॉइंटमेंट? व्हाट इज द रोल? व्हाट इज द रोल ऑफ जज? व्हाट इज द फेयर ट्रायल? Fair trial. So why it is called fair trial? And then similarly, we will see that keywords are there. So you have to learn keywords from NCRT. Examination उसको थोड़ा सा उसको ट्विस्ट कर देता है. एंड देन वी से हाँ यही तो है, मैंने भी यही पढ़ा था, यही बात तो हम ध्यान से पढ़ते नहीं. So please go for these highlighted words, keywords, because they are really going to help you. And then this is what, जैसे पीछे जो दिया गया है इसको ध्यान से पढ़िए, roles and functions, so that everyday newspaper that you are doing, it will make more sense to you. You will be able to make out more out of the newspaper, rather than I should say going by any other thing. So that is how it is. And I'll be opening the complete textbook because I'm having it. Okay, this is how it is. So we have gone with the chapter number 1 already. We have done this. I'm just taking you for a quick review. So do not ignore key areas and keywords. Try to interlink your knowledge with the textbook. Try to be a lively reader. Try to be a smart reader. Then only it will make more sense. So this one, understanding secularism, was missing from my side. So secularism, you all know, understand it very clearly. Go for a small definition. Go for small key points. Why it is important to separate religion from state? खुद सोचो पहले. Tyranny, coercion, ऐसा करके तो आएगा नहीं directly, but then indirectly question will be coming on culture, question will be coming on some other aspect. So what is Indian secularism? That also you should do not, one religious community should not dominate, and then some members of religious community should not be dominating their members or other people. So it is very very clear and very very smart. So you should not taking it a very casually कि हाँ मुझे तो पता ही है. So celebration of a religious festival within school, it is violation of government's policy of treating all religious equally. So government schools cannot promote any one religion. Government schools we are talking about. Can private school do so? They cannot also do so. But then minority can do so. But then there is also a way to doing it. So that is how you have to understand. You have to understand the issues. For example, some time back also, अलामा इकबाल की एक पोयम थी, उसके ऊपर अभी विवाद हुआ था in Uttar Pradesh. So we have to understand. You have to understand the difference also between the Indian and the uh, you know uh, and the western part. And similarly, France की जैसे एग्जांपल दिया गया, तो आप हिजाब का एग्जांपल लीजिए. हिजाब केस is still going on. It has not been completely as far as I understand, it's still, the verdict has not been there, or verdict has been there. What do you say in case of hijab? It has been further
I should say it has been further requested that it should be taken by a bigger bench. Correct? Yes, sir. Yeah, Yes, sir. correct. So going further, why do we need a parliament? So why do we need a parliament? So that if you think on your own like this, that's how we discussed also, that people and their representatives. So people and their representative types of representative are there. You should make a mind map over here, and you should be talking about different ways. When it comes to role of parliament, this chapter is not talking about, but we must be very clear about. Let's say we were talking about political parties, वो भी आपको पता होने चाहिए. Secondly, you should be knowing about all committees. You should be knowing about members. You should be knowing about कि members होते कैसे हैं. सो नेशनल गवर्नमेंट कहा जा रहा है, ये वही सिंपल मेजोरिटी की बात आ गई, कोलिशन गवर्नमेंट की बात आ गई, तो सारी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं. दैट इज व्हाई यूपीएससी इज आस्किंग कि कितने जगह से खड़े हो सकते हैं, कितने. एक वो इलेक्शंस की बात होने लगी आज, जैसे बात हो रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मस्ट बी रिमूव्ड, impeached, something of that sort is always in the news. So how he is elected or she is elected, and what kind of provision is given in the कॉन्स्टिट्यूशन विद रिगार्ड टू इट, ये एकदम क्लैरिटी से होना चाहिए. पहले इतना इंपॉर्टेंट मेंस में होता था, अब लेकिन उतना प्रीलिम्स में ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस वहां से होगा, उस तरीके से होगा. स्टार क्वेश्चन, अनस्टार क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन हमें उससे ज्यादा जाना पड़ेगा. आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू टू विजिट द लोकसभा सेक्रेटरीट, लोकसभा वेबसाइट, एंड सी हाउ इट सेक्रेटरीट वर्क्स. वो वहाँ पे एफएक्यूज और बाकी चीजें दी हुई हैं. दे विल बी हेल्पिंग यू आउट. सिमिलरली विद द नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड इलेक्टेड मेंबर्स, कितने नॉमिनेटेड हैं, कितने इलेक्टेड हैं, कितने टाइम बाद क्या होगा. सो अब फ्यू में वुमेन मेंबर्स की बात है, फ्यू में तो मेंस में होगा, लेकिन पहले कौन थी, पहले उसमें कितनी थी, कितना परसेंटेज आज की डेट में है, हाउ मच परसेंटेज इज देयर, क्या ज्यादा हो गया कि पहले से कम हो गया. दैट इज हाउ वी हैव टू गो अबाउट इट. लॉज का मैंने आपको बताया ही है कि लॉज कैसे आए, दैट्स व्हाट वी डिस्कस्ड इन वेरी ब्रीफ, वो हमें देखना है. और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, so next chapter is talking about, unit 3 is talking about judiciary. What is the role of judiciary? सीधा क्वेश्चन ही है एक तरीके से, ये हमेशा हमेशा आता है. अब की वर्ड्स हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू ढंग से पढ़ना है. व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? एग्जाम में तो क्विक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होना चाहिए ना, तो इसलिए यहाँ जुडिशियल रिव्यू सबने वर्ड सुना है, पर पता कितनों को. अप होल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, उसको ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, समझो क्या दे रहा है. व्हेन देयर इज डाउट, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डिस्कस इट अगेन. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी. एग्जाम में क्या आ जाता है वर्ड, कमिटेड जुडिशरी, एंड देन पीपल राइट, हाँ भाई जुडिशरी तो कमिटेड है. इफ जुडिशरी इज कमिटेड, then there cannot be any justice. Judiciary must be independent. So our interpretation of words is also very important. अगर हमें interpret करना ही नहीं आता, तो then there is going to be a problem. So that is why high court कितने हैं, फर्स्ट हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हुए, ठीक है, इसके अंदर बेसिक्स दिए हुए हैं, बट देन हाई कोर्ट्स, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर, what is different between high court administration and the supreme court administration, how high court collegium, it जो how मतलब the CJ of high court is selected by collegium system पे तो बात हो ही रही है. It has been in news so much, so you should know the whole chronology. There has been very beautiful articles, and also we have done in other lectures on YouTube also कि क्या है वो, with respect to newspaper also, what are the different branches of legal system. So criminal law, civil law. आज ही मुझसे पूछा था भास्कर ने दैट क्या सिविल लॉ में भी जेल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. सो डज एवरीवन इज हैविंग एक्सेस टू कोर्ट्स, जब ये आप सोचोगे तो आपको नालसा समझ में आएगा. नालसा समझ में आएगा तो नालसा खोलोगे साइट पे, तब जाके आप पीटी का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. सो दिस इज द प्रोबिंग पॉइंट. दीज बुक्स आर प्रोबिंग पॉइंट्स. इन बुक से हमें आगे जाना है, तो इसलिए हर कोई नहीं जा सकता, खुद जाना है. ह्यूमन राइट्स में चैप्टर में नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको खुद सोचना है. वुमेन राइट्स की बात नहीं कर रहा है, लेकिन आपको खुद सोचना है. डेथ बाय हंगर, सो राइट टू फूड कैंपेन, जीरो हंगर खत्म करने के लिए चाहिए. तो दैट इज व्हाई क्वेश्चन विल कम फ्रॉम हियर. सो हम इसको पढ़ लेते हैं, इसमें तो कुछ नहीं दे रखा, अरे इसमें सब कुछ दे रखा है. अब अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जैसे मैंने बोला, उसको समझने के लिए चाहिए. यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्वेश्चन आसपास से आएगा. लास्ट ईयर ओनली द क्वेश्चन हैव बीन देयर विद रिस्पेक्ट टू बार. उससे पहले जुडिशियल कस्टडी, अभी आगे भी आ जाएगा. अभी तो जेल्स पे आ जाएगा, जेल सुपरिटेंडेंट, जेल मैनुअल्स, कैसे है, किसका रोल है, पैरोल क्या होती है, कैसे होता है, हो क्या रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का रोल है कि किसका रोल है, and how it is being functioning. Coming to the next chapter, it is talking about understanding marginalization. Okay, understanding marginalization. This is very very important. You have to understand marginalization. अब पहले बता दिया, लॉ बता दिया, सब कुछ कर दिया. नाउ दे आर आस्किंग यू टू अंडरस्टैंड मार्जिनलाइजेशन. दैट मीन सोसाइटी में मार्जिनलाइज्ड है, और ब्यूरोक्रेसी से अच्छा क्या होगा मार्जिनलाइज सेक्शन के वर्क करने के लिए.
There's nothing much better than that. That is how it comes into picture. आदिवासीज, उनके लॉज पता होने चाहिए, ग्राम सभा का रोल पता होना चाहिए, फॉरेस्ट राइट एक्ट पता होना चाहिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में क्या बोला गया ये पता होना चाहिए, SC ST एक्ट जो है उसके अंदर कैसे कैसे हाउ इट हैज इवॉल्व 1955 के बाद ये पता होना चाहिए, व्हाट आर द अमेंडमेंट्स, व्हाट आर द स्पेशल प्रोविजंस, व्हाट आर द स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्पेशल एरियाज, ये पता होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट कमीशन जो है आपका, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स है, उसके आगे क्या, और उसके साथ साथ फिर हमारे स्टेट्स का हमें पता होना चाहिए। इसलिए क्वेश्चन आता है ये ट्राइब है, अब ऐसे कैसे रटा जाए, लेकिन फील ही नहीं होगा, इम्पैथी ही नहीं होगी तो ट्राइब याद कैसे करोगे? अब चार्ट मिल जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स पे जाइए, सारे ट्राइब्स लीजिए, उड़ीसा पे जाइए, उड़ीसा वंडरफुल, नॉर्थ ईस्ट वंडरफुल, कंसंट्रेशन है। So that is why it is not about दादू की story and all that. This is you understand well, but how to apply? You know, अभी अभी इतने सारे हमने आइलैंड्स का नाम हमने चेंज किया है. There is a reason behind it. फॉर एग्जाम्पल जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई. अब जो लोग जमशेदपुर से हैं, लाइक उनसे पूछा जाएगा बाद में, बोलेंगे ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं. तो क्या कर सकते हो फिर? यू आर नॉट फिट फॉर इट. जो चीज हमारे सामने है, जो चीज हम सोच सकते हैं, आज सोचिए, एग्जाम से 10 दिन पहले नहीं सोचना है. देन सिमिलरली थिंग इज लिंक विद द फोक कल्चर. यहाँ से फोक कल्चर आ जाएगा, फोक आर्ट आ जाएगी, फोक डांस आ जाएगा. जगन्नाथ कल्ट की एग्जांपल दिया, देयर आर सो मेनी मोर. नागालैंड का फेस्टिवल आ चुका है, हॉर्नबिल फेस्टिवल एंड सो फोर्थ. तो जल्लीकट्टू नहीं आएगा, कंटारा नहीं आएगा भाई, आगे जाना पड़ेगा उससे. यू नो, एनीथिंग इज सेंसेशनल will not come in examination. Similarly, development, तो मिनरल डेवलपमेंट को देखिए, इंडिया बुक की बुक आई हैव टू आल्सो सेंड टू यू. मिनरल डेवलपमेंट को देखिए, माइनर मिनरल, मेजर मिनरल्स, काम होगा कैसे नहीं आएगा. सो दैट इज हाउ. फिर प्रोडक्ट्स की बात भी देखो दी हुई है, तो ट्राइफेड देखिए, आपके घर में रेशम है, आपके घर में सूती हो सकता है, कैसे होता है, हनी आ रहा है, कहाँ से आ रहा है भाई, तो एक लिस्ट बनाइए, कोल माइन से लेकर हर चीज की एक लिस्ट बनाइए, एंड वी विल बी थ्रू, वी विल बी नोइंग वेरी वेल. उसमें आपको एरिया भी मिल जाएगा. सिमिलरली इट इज टॉकिंग अबाउट नेशनल पार्क्स आल्सो, इट इज टॉकिंग अबाउट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आल्सो. सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि ये सब कुछ यहाँ पर ही है. उसको एक स्मार्ट तरीके से करना है विदाउट गेटिंग ओवरवेल्म. डू नॉट गो इनटू टू मच कैलकुलेशंस. चैट जीपीटी भी आ चुका है, गूगल भी है, और आप भी हैं. तो आप अगर इफ यू नॉट स्मार्टर देन चैट जीपीटी एंड गूगल, देन एग्जाम कैन नॉट बी इन योर कंट्रोल. अब मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन ठीक है, आप उसको देख लीजिए, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा तो आएगा नहीं. लिटरेसी रेट जरूर जाना जाएगा. पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मुस्लिम्स का नहीं चाहिए, बट लिटरेसी रेट फॉर ऑल, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल. एग्जाम कैन नॉट सेग्रीगेट, एग्जाम विल नॉट बी आस्किंग ए नैरो माइंडेड क्वेश्चन, पर पता होना चाहिए सोशल रिफॉर्म्स किसने किया, मॉडर्न टाइम्स में क्या हो रहा है. सो दैट इज हाउ एग्जामिनेशन इज आस्किंग यू टू बी मोर स्मार्टर, मोर प्रोबिंग, मोर अवेयर. गेटोइजेशन खत्म करने की बात पूछेगा वो. यहाँ गेटोइजेशन का डेफिनेशन दिया है, व्हाट द गवर्नमेंट, व्हाट स्कीम्स आर देयर. तो उल्टा आएगा, you know, rather than being negative. Confronting marginalization, yes. गोरखालैंड में प्रोटेस्ट हैं, टिपरा लैंड की बात हो रही है अभी, कभी छत्तीसगढ़ में शुरू हो जाता है, कभी कोडुगु में शुरू हो जाता है. दे हैव आल्सो फंडामेंटल राइट्स. सो आर्टिकल 17 की बात हो रही है. देन यू लुक फॉर मोर आर्टिकल्स, not only just for dalits, but for what about children, what about dalit children, then what about education in their language. तो ऐसे करके आप वहां तक पहुंच सकते हो. कोई ना कोई प्रोग्राम आया होगा बहुत फेमस, आप गूगल करते तो आता है, but we are not able to make it out. That is how it is. So कबीर की बात हो रही है, ठीक है, if you can make out some fact, you just take it, otherwise you just leave it. लेकिन और दलित राइटर्स देखिए, ज्ञानपीठ अवार्डी देखिए, स्टेट राइटर्स देखिए. So this is how we have to see that schedule, as I already told you, scheduled caste and scheduled tribe prevention of atrocity act 1989, ये देखना है. ये नहीं देखना कि भाई कैसे, वो तो आपको जब when you get into IPS or other services, then automatically you will know. But then here you need to know very basic and smart fact. So act distinguishes several levels of crime, ये देखना है हमें कि कैसे वो करता है. ओके, सो प्रोविजंस उसके चेंज कैसे हुए, ये आपको समझना है. मैनुअल स्कैवेंजिंग ऑलरेडी वी हैड टॉक, नाउ ऑलरेडी इट हैज कम ओवर हियर. सो ऑलरेडी वी वर टॉकिंग अबाउट इट, बट ठीक है. बट देन दिस इज अबाउट आदिवासी डिमांड्स एंड द 1989 एक्ट. तो इसके हिसाब से आप इन्वायरमेंटल एक्ट्स भी देख सकते हो, चिपको से लेकर बाकी चीजें. एंड देन लास्ट चैप्टर आई बिलीव सो, पब्लिक फैसिलिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट स्कीम्स आर देयर at the national level for the poor people, for the disabled, for the marginalized. एंड उसमें है क्या, दे क्या रहे हो. स्कीम्स ही तो प्रमोट करोगे बनने के बाद भी, तब तो रटी रहनी पड़ेंगी 24 घंटे, और 2 बार में याद भी हो जाएंगी. तो अभी अपने आप को कलेक्टर समझो और उनको याद कर लो, समझो, और ऐसी बात समझो जो यूनिक है, हो सकती है कि नहीं हो सकती. सो दैट एलिमेंट मस्ट बी इंक्रीज रादर देन जस्ट मगिंग अप डायरेक्टली.
अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंड्स मनी ऑन रुपीज गोज टू, आइडिया होना चाहिए आज के बजट के हिसाब से, दिस इज बजट 2018-19, but we are talking about 22-23. So that's how it is. We have to see that what smart thing we can make out. वाटर सप्लाई नॉट इन चेन्नई, बट वाटर सप्लाई देखिए कोई स्कीम आई क्या, आ चुका है ऑलरेडी, एक बार वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम आया था 2 साल पहले, तो क्वेश्चन केम अप फ्री वाटर के ऊपर, तो आएगा आएगा इधर से ही, बट नॉट इन द सेम फॉर्म। एसडीजी गोल्स वी हैव ऑलरेडी स्पोकन कि वो हमें आने चाहिए, नॉट जस्ट वाटर, थिंक अबाउट अदर एक्सेस, उसमें भी आप देखिए कि कुछ स्पेशल क्या हो रहा है। सो ये नहीं आएगा कि भाई मुंबई रेलवे जैसे अभी इट इज गिवन कितने लोग अटेंड कर रहे हैं, नॉट कम, बट देन समथिंग स्मार्ट विल कम which a common person is especially going to miss out. A person with only aware understanding and aware acumen can only make out that. Otherwise, one is not able to make out. Law and social justice. Law and social justice. That means what? Law भी पढ़ लिया भाई, but then social justice ही नहीं हो तो law किस काम का? तो social justice का मतलब गरीब और अमीरी कम होनी चाहिए, देयर मस्ट बी इनइक्वालिटी मस्ट बी ब्रॉट डाउन। उसके बाद जो है पब्लिक उसके लिए क्या हो रहा है, लेबर्स के लिए क्या हो रहा है, वर्कर्स के लिए क्या हो रहा है, डेली वेजर्स के लिए क्या हो रहा है, दैट इज वाई एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड की बात अभी थी, वो इंपॉर्टेंट है। देन मिनिमम वेजेस एक्ट इंपॉर्टेंट है, एमजी नरेगा इंपॉर्टेंट है, भोपाल गैस ट्रेजेडी तो ठीक है लेकिन उसकी वजह से जो सुधार है वो इंपॉर्टेंट है। दीज थिंग्स विल कम इन एग्जाम रादर देन डायरेक्टली दीज थिंग्स। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हर स्टेट में, पूरे भारत में कोई ना कोई एक रोल मॉडल है, तमिलनाडु मॉडल, केरला मॉडल, पंजाब मॉडल। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेस्ट, और उसको फिर कॉन्स्टिट्यूशन से देखो। अब जो मैंने लास्ट चैप्टर लॉ एंड सोशल जस्टिस लिया, सारे टीपीएसपी के जितने भी आपके एक्ट्स हैं वो आपके याद होने चाहिए। आप उसको देखोगे इस कॉन्टेक्स्ट के बाद तो आई थिंक एक बार में आपको याद हो जाएंगे। याद का मतलब यू डोंट हैव टू मग इट बाय हार्ट, you just read them carefully and in examination you will be able to make out the anomaly into it. This is what I want to convey. Prelims के एंगल से ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड कैसे इसको देखना है, इतना भी अगर आपने देख लिया और उसके बाद आप मुझसे बात करते हैं, हम इसको देखते हैं समझते हैं, तो आई एम श्योर डेफिनेटली अ ग्रेट हेल्प कैन बी प्रोवाइडेड। So wishing you all the best. Thank you very much for your patient hearing. I hope you have been making the notes, and definitely you can get back to me in order to take it to the next level. Thank you very much and see you soon with the next episode.